हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई बात सही या हाँ में कही जाती है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस में हम किसी बात को ना या नहीं में बदल देते हैं। बहुत आसान रूल है, हमें सेंटेंस में नॉट जोड़ना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस, दिस इज माई बाइसिकल। नेगेटिव सेंटेंस, दिस इज नॉट माई बाइसिकल। देखो बच्चों, हमने सिर्फ नॉट ऐड किया। पॉजिटिव सेंटेंस, माई फ्रेंड्स विल कम नाउ। नेगेटिव सेंटेंस, माई फ्रेंड्स विल नॉट कम नाउ। यहां भी हमने will प्लस नॉट किया। सबसे पहले एक सिंपल रूल समझ लो। अगर सेंटेंस में बी वर्ब, इज, एम, आर या हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, कैन, विल नहीं है, तो हमें डू, डज, डिड प्लस नॉट का यूज करना होता है। याद रखो, प्रेजेंट टेंस डू, डज, पास्ट टेंस डिड। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव अ बाइसिकल। नेगेटिव सेंटेंस, I do not have a bicycle. Short form, I don't have a bicycle. I like vegetables. Negative, I do not like vegetables. I don't like vegetables. अब हम practice करते हैं sentence 1. This kite is nice. Add is plus not. This kite is not nice. Sentence 2. Your painting was on the table. Add was plus not. Your painting was not on the table. Sentence 3. We can carry the painting. Add can plus not. We cannot carry the painting. Sentence 4. We will leave it here. Add will plus not. We will not leave it here. Let's make it super easy and fun. Students, remember this rule. For present tense, we use do plus not equals do not. For past tense, we use did plus not equals did not. And yes, we can also use short forms. Do not becomes don't. Did not becomes didn't. They learn classical dance. Now we add do not. They do not learn classical dance. Easy, right? They danced in the school annual day. This is past tense, so we use did not. They did not dance in the school annual day. The audience clapped for them. Again, past tense. The audience did not clap for them. Important, when we use did not, the verb becomes base form, clapped becomes clap.